आज तुमको प्रैक्टिकल आज संध्या संध्या की राति रे तुमको सेंड कर देबी अटैच कर देबी सब मूलरू ठीक अछि जेम तुमरो हां एसक्यूएल दउतली सर ठीक एडा को पेज जाइतला सर गोटे मिनिट कहूँ 134 ना केते जाय जाइतला पूरा 138 पर देखो नुआ चैप्टर आरंभ हो ओ चैप्टर राइट हां सर 4 ना 5th फिफ्थ सर एउट सर writing control structures. After completing this session, we should able to do the following: identify the use and types of control structure, construct an if statement, right? I mean PLS को ले if statement केमती use करते सेमती सेटा हमें जानिबा. Use case statements and case expression. Construct and identify loop statements. Use guideline when using conditional control structures. For objective, you have to learn the write to PLSQL blocks containing declarative and executable section. You have also learned to include expression and SQL statement in the executable block. So in this session, we'll be learn to how to use control structures such as if statement, case expression, and loop construct in PLSQL block, right? इस सेशन में जानिबा if statement केमते हमें यूज करिबा केस एक्सप्रेशन केमते हमें यूज करिबा लूप टाउ केमते हमें को स्ट्रक्चर रे हमें पीएलएस को लिखिबा से सब विषय हमें जानिबा जोटा कि हमरो एसक्यूएल रे एते इजी रे हमरो हो नथला जोटा राइट तापय हमको लंबा जोटा कोड लिखिबा को so if eta structure if execution flow eta moro right तो if एठी expression रहबो expression माने condition if रो condition रहबो जदी से condition रा true हबो then पर मोर जोटा रहबो सेटा होची true वाला statement सबु कंडीशन रा दीटा पार्ट थाए गोटे होची तमरो कंडीशन फुलफिल हेले कोनटा हबो से कंडीशन मोर फॉल्स हेले कोनटा हबो जोटा मोर ट्रू हबो से कंडीशन ट्रू हबो देन पर जोटा लिखिबी सेटा होची मोर ट्रू वाला स्टेटमेंट जदि मोर कंडीशन फॉल्स होची ताले मोर ता पर जो एक्सप्रेशन ता लिखिबी आफ्टर ब्लॉक भीतर जोटा लिखिबी सेटा होची मोर फॉल्स वाला पार्ट जोटा कि मोर एल्स रे लिखा हुई राइट एल्स रे if रे मोर जोटा लिखा हबो सेटा ट्रू वाला पार्ट एंड की कंडीशन जदि फॉल्स हुए त एल्स ब्लॉक भीतर जोटा लिखा हबो सेटा मोर फॉल्स वाला पार्ट राइट सेमति के मोर if रे सिंपल अछि if रे मोर चारि प्रकार अछि गोटा होची सिंपल if जोटा कि ओनली ट्रू रिटर्न करिवो आउट होची मोर if else ट्रू और फॉल्स रिटर्न करिवो नेस्टेड if जोटा कि मोर कंडीशन भीतर आउ भी कंडीशन मु देई परिबी राइट देन मोर केस स्टेटमेंट रे होची मोर जेमति तम लैंग्वेज तमर जानथिबो स्विच केस सिस्टम जेमति थाए तमर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट रे मोर दीटा पार्ट थाए इफ एल्स एंड स्विच केस एठी पीएलएस को ले स्विच केस कुहाएनी ताकू आज केस एक्सप्रेशन राइट तो केस रे मोर एठी कंडीशन रहइबो या फिर वेरिएबल तमे रख परिबो से वेरिएबल तमर मल्टीपल एक्सप्रेशन से तो मैच करिवो जो एक्सप्रेशन से तो सेटा मैच हेगला ता भीतर थिबा स्टेटमेंट ता जहां भी तमे लिखथिबो सेटा को एक्सिक्यूट करिकि से शो करिवो right then loop construct sequence of statement that is repeated more than once तम किछिरा स्टेटमेंट को मत जदि गोटे रु अधिक थर जदि एग्जीक्यूशन करिया को पड़े गोटे रु अधिक थर जदि मते आउटपुट आनिया को पड़े सेही केस रे मु लूप यूज कर पारि राइट लूप मोर दी प्रकार अछि गोटे होछि व्हाइल लूप आउट होछि मोर फॉर लूप PLSQL बट लैंग्वेज तमर तीनटा लूप थाए गोटे होछि व्हाइल डू व्हाइल एंड फॉर लूप राइट लूप मोर एक्चुअली दी प्रकार अछि गोटे होछि फिक्स्ड लूप आउट होछि वेरिएबल लूप फिक्स्ड लूप डेफिनाइट टाइम्स जाय जेतला मु कोनोसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करिया पई चाहूची सेटा होछ मोर फिक्स्ड लूप जेंतो मु तुमको कहली 100 टाइम्स तमे तमरो नेचुरल नंबर ता शो करो तो सेटा मोर फिक्स्ड लूप हेगला माने मु गोटे स्पेसिफाई एंड पॉइंट दे देली जे एतिकी जाय मोर लूप ता चलिबो वेरिएबल लूप कोन जे इनफिनाइट टाइम जाय तमरो एग्जीक्यूशन चलथिबो सेटा होछ मोर वेरिएबल लूप क्लियर controlling flow of execution you can change the logical flow of statement within the PLSQL block with a number of control structure this lesson
address 4 types of PLSQL control structure, that is conditional construct with the if statement, case expression, loop control structure and the continue statement. Continue statement माने से statement टाको से continue करथु, right? जैसे तमरा condition false न हिच. First, using if statement. Syntax: if condition then तापरे मोर condition टू वाला statement मोर रहिबो. Then जदि condition टा मोर false हुए ताले else रे मु लिखिबि ता condition रो false वाला statement. जदि मते condition भितरे आउ गोटे condition दबार अछि ताले else if रे मु ताकु देबि. Right? Suppose तमरा गोटे total marks अछि माने 5-6 जनकर total marks अछि. सेठी तमरा तमे मेंशन कलो जे जीए 300 रु ऊपर को अछि तार फर्स्ट डिवीजन आसीबो, जे 200 रु ऊपर को अछि तार सेकंड डिवीजन आसीबो, जार 100 रु जार ऊपर को अछि तार थर्ड डिवीजन आसीबो. अदरवाइज बाकी सब मोर फेल हेबे जे 100 रु लेस देन अछन, राइट? तो एबे 300 रु जे ऊपर को अछि ताकू मु चेक करबी. चेक कला पर जदी से ट्रू अछि ताले फर्स्ट डिवीजन देखाबो. जदी ट्रू नाही आइदर मोर सेकंड डिवीजन हे पारे, थर्ड डिवीजन हे पारे या फिर मोर फेल हे पारे. तो सेटा मु से कंडीशन मु कोडी नेबी, एल्स ब्लॉक भितरे नेबी. एल्स रे मु इफ पुनी नेबी. तो ताको जे नेस्टेड इफ, नेस्टेड कंडीशन. बुझला? गोटे कंडीशन भितरे आ गोटे कंडीशन तमे यूज करूछ. If statement, the structure of the PLSQL if statement is similar to the structure of if statement in the other procedural language. It allows PLSQL to perform actions selectively based on conditions. In the syntax is condition is a boolean factor that is only written as a true, false or null, right? Condition moro sadale tinta jinso expression moro written kar pare, goto hoji true, false and null, right? Then introduce a clause that associated the boolean expression with the sequence of statement that follows it. Statements can be one or more PLSQL or SQL statement. They may include additional if statement containing several nested if, else and else if statement. The statements in the then clause are executable only if the condition in the associated if clause evaluated to true, right? जदि मोर ट्रू, जदि मोर कंडीशन टा जदि मोर ट्रू हुए तापर मोर देन रुहे, देन पर जो स्टेटमेंट टा देबी सेटा होची मोर ट्रू वाला स्टेटमेंट. जदि मोर कंडीशन टा फॉल्स हुए ताले एल्स पर जो स्टेटमेंट टा देबी सेटा होची मोर फॉल्स वाला स्टेटमेंट, राइट? तापर हम वेराइटी टाइप रो इफ एल्स हम करि परिबा. गोडो होची नेस्टेड इफ एल्स, सिंपल इफ या फिर मोर इफ एल्स मु हम करि परिबा. बुझला? The syntax is if else if is a keyword that introduce a boolean expression if the first condition yield false or null. The else if keyword introduce additional conditions. Else block introduce the default clause that is executed if and only if none of the earlier predicted introduced by if and else if or true. The tests are executed in sequence so that the later predict the might be true is permitted by the earlier predict that is true, right? जदि मोर फास्ट जदि मोर कंडीशन इफ कंडीशन जदि ट्रू हे जाय ताले एल्स इफ मोर एक्जिक्यूटेबल हबन. फास्ट इफ रो कंडीशन जदि फॉल्स हुए ताले मोर एल्स इफ रो कंडीशन को से चेक करिवो. बुझला? जदि मते नेस्टेड इफ एल्स मु जदि नउची. एंड इफ मार्क द एंड ऑफ एन इफ स्टेटमेंट. Else if and else are optional in an if statement. You can have any number of else if keyword, but only one else keyword in your if statement. And if mark the end of an if statement and must be terminated by a semicolon, right? PLSQL mu कहि mandatory तमर semicolon रहिबो जति केता तमे statement गुडा को तमे end करिया पय चाहछ. देखो से वेरिएबल गोटे डिक्लेयर कला, राइट? वेरिएबल ना हला माय एज, ता भितरे से पास कला कोन वैल्यू पास कला, ठीक है 31. देन से चेक कला बिगिन इफ तमरो वेरिएबल माय एज इज लेस देन टू 11. इफ इट इज ए ट्रू देन dbms underscore output dot put underscore line I am a child, right? तो एज मोर एठी पास कला वैल्यू जेते पास कला सेटा मोर चेक कला.
जे जो वैल्यूटा मोर से वेरिएबल भीतर अछि से वेरिएबल भीतर जो वैल्यू अछि लेस देन टू 11 की जदी लेस देन टू 11 ताले मोर से चाइल्ड राइट जदी मोर लेस देन टू 11 नाही ताले मोर एल्स ब्लॉक रे से मेंशन करनी किछ राइट आनंद खाली तुमको से एग्जीक्यूटेबल करके देखे दो जदी मु एठी एल्स ब्लॉक लिखि तांदी ताले से लिखि तांदा यू आर नॉट ए चाइल्ड राइट सिंपल इफ स्टेटमेंट एटा हो मोर सिंपल इफ स्टेटमेंट एठी एल्स ब्लॉक नहीं केवल मोर कंडीशन रे ट्रू हबो ताले एटा देखे बुझला simple if statement simple if example the slide shows an example of a simple if statement with the then clause the v underscore my age variable is initialized to 31 the condition for the if statement returns false because v underscore my age is not less than 11 therefore the control never reaches the then clause adding conditional expression an if statement can have multiple conditional expression related with logical operators such as and or not right तीनटा लॉजिकल ऑपरेटर अछि मोर and or not right जदि मोर मु मूलरु कहिछि जेमिति गोटे एक्सप्रेशन रे जदि मोर तीनटा लॉजिकल ऑपरेटर जदि यूज होउछि तो प्रथमे तमरो not एक्जीक्यूट हबो तापर तमरो and एक्जीक्यूट हबो तापर तमरो or एक्जीक्यूट हबो or टा होउछि मोर ऑप्शनल पार्ट से पई से लास्ट रे एक्जीक्यूटेबल हुए बुझला for example if my first name equal to this eta तार first name right and age equal to this माने लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिवि जदि मते दीटा कंडीशन एठी कोन सिंपल इफ रे मु गोटे कंडीशन नेछि बोली गोटे कंडीशन नेछि बोली मते किछि लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिया को पड़लानी जदि मते कुआ जाय जे मल्टीपल कंडीशन जदि मोर नबा को पड़िबो जदि इफ रे सेता मते लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिया को पड़िबो एंड और नॉट as per your requirement अनुसार तमे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिवो जोठी तमरे कंपलसरी उठी गला जेमिति मोर दर तमरो अछि स्टूडेंट नेम मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 टोटल राइट तो एबे तुमको एमिति कंडीशन जदि कुआ जिवो जे जहार मार्क 1 मोर ग्रेटर देन 50 थिबो एंड जहार मार्क 3 मोर लेस देन 60 थिबो तार पास देखेबो अदरवाइज फेल देखेबो एठी कोन दीटा कंडीशन ऊपर मु कंपेयर करली गोटो होची मार्क 1 आउट होची मार्क 3 एंड सेटा को से कंपलसरी कर दला जहार मार्क 1 मोर ग्रेटर देन 50 थिबो एंड मार्क 3 मोर लेस देन 60 थिबो तार पास देखे तो एठी मु जेता कंडीशन जेता इफ रे कंडीशन नेबी सेता मु कोन करबी इफ मार्क 1 इज ग्रेटर देन टू 50 एंड मझरे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करबी एंड मार्क 3 लेस देन टू 60 राइट कंपलसरी कर दला जदि मते ऑप्शनल कहि थांदा जे जहार मार्क 1 50 थाउ या फिर तमरो मार्क 3 टा लेस देन 60 थाउ ताले मते पास देखो एठी कोन ऑप्शनल हेगला फर्स्ट कंडीशन ट्रू हेले भी से देखेबो सेकंड कंडीशन ट्रू हेले भी देखेबो दीटा के भीतर जो कंडीशन रा तम ट्रू हे जो तारा ट्रू वाला स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कर दो बुझला तो इफ रे मल्टीपल कंडीशन को कंपेयर करके गोटे एक्सप्रेशन हिसाब रे ट्रीट करिया पय मते लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिया को पड़े एंड लॉजिकल ऑपरेटर तम तीन प्रकार अछि गोटे अछि एंड और नॉट अब ए एंड और नॉट तमर रिक्वायरमेंट अनुसार तमे ताको यूज करिवो तमर क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट जहा थिबो तमर रिपोर्ट रो रिक्वायरमेंट जहा थिबो से अनुसार तमे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिवो जोटी एंड ऑपरेटर यूज करिया पय कहिछि ता एंड ऑपरेटर कंपलसरी माने एंड ऑपरेटर तमे यूज करिवो जोटी ऑप्शनल कहिछि सेटा ऑप्शनल यूज करिवो राइट बुझला एटा होछि मोर इफ एल्स मोर ब्लॉक रे से देछि जोटा कि हमर प्रथम एग्जांपल टा थला सिंपल इफ मोर एठी मोर इफ एल्स ब्लॉक टा देछि सेम जिंसो देछि जे देछि माय एज इज लेस देन टू 11 जदि मोर एटा ट्रू होछि ताले आई एम ए चाइल्ड ट्रू कमांड रे देखेबो जदि मोर एटा ट्रू होउनी कंडीशन ट्रू होनी ताले एल्स ब्लॉक भीतर सी देखौछि आई एम नॉट ए चाइल्ड बुझला if then else statement an else clause is added to the code in the previous slide the condition has not changed and therefore still evaluated to false recall that the statement in the then clause are executed only if the condition returns true in this case the condition returns false and the control moves to the else statement right एटा मोर नेस्टेड इफ एल्स देखो मोर सेम वेरिएबल डिक्लेयर कला वैल्यू पास कला 31 देन चेक कला इफ माय एज इज लेस देन टू 11 if it is a true then
आई एम ए चाइल्ड डिस्प्ले करिवो जदि ट्रू नुह ताले एल्स ब्लॉक रे पुनी इफ कंडीशन नला एल्स इफ माय एज इज लेस देन टू 20 जदि लेस देन टू 20 अछि देन से जो स्टेटमेंट देला सेटा मोर देखेबो आई एम यंग राइट then again since else block रे चेक कला जदि मोर कंडीशन false हैला then again else block रे चेक कला my age is less than to 30 if it is true then से देखेबो कोन I am in a in my 20s right I am in my 20s then मोर ए कंडीशन रे जदि मोर false हैला then again से else block रे पुनी चेक कला my age is less than to 40 if it is true I am in my 30s right then मते again जदि मोर से कंडीशन टा मोर जदि false हैला then else block रे पुनी मोर से एक्जीक्यूटेबल करिवो जोटा कि होची मोर my age is less than to 40 then तमरो देखेबो से I am in 30s then again से देखेला से जदि मोर 40s रु जदि से एक्सेस अछि जदि then से देखेबो I am always young बुझला तो मु जो एटी वैल्यू टा जो पास करची 31 सेटा प्रथम कोड चेक करबो एटा को चेक करबो false हेले राइट तापर एटा को चेक करिवो false हे गेला देन एटा को चेक करिवो false हे गेला देन एटा को चेक करिवो ट्रू हे गेला 31 टा इज लेस देन टू 40 राइट देन से देखेबो कोन आई एम इन माय 30s देखला आउटपुट आसला if else if clause the if clause may contain multiple else if clause and an else clause the example illustrate the following characteristics of this clause the else if clause can have condition unlike the else clause the condition for else if should be followed by the then clause which is executed if the condition for else if returns true when you have multiple else if clause if the first condition is false or null the control shift to the next else if clause right first condition टा चेक करिवो जदि मोर कंडीशन टा false हैला then से else block को आसी जदि से कंडीशन टा true हे गेला तो ता भीतर स्टेटमेंट से एक्जीक्यूट कर बुझला null value in if statement declare my age number then my age is less than to 11 तो एठी मोर से देखेबो कोन एठी मु वैल्यू किछि पास करनी तो एटा कोन नल एक्सप्रेशन आकारे जीवो से एठी मु वैल्यू किछि पास करनी तो नल एक्सप्रेशन जीवो तो सेटा को से देखेबो आई एम नॉट ए चाइल्ड वैल्यू किछि पास करनी तो कंपेयर करिवो कोन राइट null value in if statement in the example in the slide the variable v my age is declared but not initialized the condition in the if statement returns null rather than true or false in such a case the control goes to the else statement जोटी मु variable भितरे कोनसी वैल्यू पास कोनी त कंडीशन जेताले दोची इफ कंडीशन जेताले दोची सेटा से नल हिसाब ट्रीट करबो तो सी कोन करबो से कंडीशन ता फॉल्स हेला तो एल्स ब्लॉक रो जहा लिखाई छी ताकू से एक्जीक्यूट करबो करिके देखे दउ त बुझला एडा हम मंडे पढिबो केस स्विच केस ओके ठीक है मु रात्रि तो मु प्रैक्टिकल उडा पठे देबो ओके थैंक यू